Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is democracy and equality. Learning topics: equality before law, inequality, how have other countries been affected, social and economic inequality, universal disenfranchisement, challenges before democracy, government's efforts to implement equality assured by the Constitution. Equality is the central theme or soul of democracy. It is the precondition that ensures justice to all the people of a society or country. Here, equality means social, economic and political equality among citizens. In other words, equality is the foundation of democracy on which the other pillars rest. तो इक्वालिटी किसी भी डेमोक्रेसी का बेस होता है जिसपे बाकी सारे पिलर्स लाई करते हैं. इक्वालिटी किसी भी डेमोक्रेसी के सिटीजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट. क्विक फैक्ट्स: democracy is based on the principle in which control or authority comes from public and the ruler and non-ruler are the same. तो आपकी जो डेमोक्रेसी है इट इज बेसिकली बेस्ड कि आपके जो रूलर्स हैं या फिर नॉन रूलर्स भी हैं, जो मेन पावर या कंट्रोल अथॉरिटी आती है वो सीधे लोगों से आती है. Equality before law. The rule of law states the supremacy of law, which means that all persons, individuals and government are subject to law. The Indian Constitution recognizes every person equal before the law, which means that law is supreme and all people, big or small, are equal before the law. Everybody has to abide by the law and anybody who violates the law is punished according to the law. This is important in a democracy so as to preserve the true nature of a democratic society where everyone's dignity is respected. No man is considered above law. In nutshell, it states that all are subject to laws and no one enjoys any special privileges. No one is exempted from law. The equality of बिफोर लॉ का मतलब होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रिच और पुअर, बड़े स्टेटस पे है, छोटे स्टेटस पे है, लॉ के सामने हर कोई बराबर है. सबको लॉ को फॉलो करना पड़ेगा और जो नहीं करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, रिलीजन, रिच, पुअर स्टेटस, उसको सेम तरीके से ट्रीट करा जाएगा. नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ और जेंडर. एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स, मार्केट्स, वेल्स, रोड्स एंड बेथिंग घाट्स. इट debars untouchability and anybody practicing it is punishable according to the law. तो लॉ के अकॉर्डिंग जितने भी लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, रिलीजन, रेस के बेसिस पे नहीं किया जाएगा. जितने भी लोग हैं उनको हर पब्लिक प्रॉपर्टी पे उतना ही अधिकार है जितना कि किसी और इंसान को होता है. अनटचेबिलिटी यानी कि अछूत जो होता है वो बिल्कुल भी लॉ सपोर्ट नहीं करता है. जो भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है उसको पनिशमेंट दी जाती है. आपकी जो सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी होती है वो अलग अलग रीजंस की वजह से होती है. जैसे कि जो लोग होते हैं, औरतें होती हैं, वो पढ़ी लिखी नहीं होती हैं तो सोशल इनइक्वालिटी आ जाती है. इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बेसिकली गरीबी की वजह से आती है. कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं. Number 1, caste discrimination. The inequality based on caste is quite predominant in India. Caste is an important factor in matrimonial alliances and interaction in society. Untouchability is the worst form of caste inequality. Since ancient times, India has suffered from the evil practice of untouchability when a huge strata of society called the Shudra or Dalit was kept segregated from the society as they belonged to lower castes. A famous Dalit writer, Om Prakash Valmiki, in his autobiography Jhuthan, clearly narrates that in his school life he was made to clean the floor of his classroom while his classmates were studying. It was only when Valmiki's father confronted the teacher on seeing his son cleaning the floor that the evil practice stopped and his son could study. Caste discrimination सबसे ज़्यादा बड़ा फॉर्म है इनइक्वालिटी का. सबसे पहले एक शूद्र यानी कि दलित नाम की एक कास्ट थी जहाँ पे एक बहुत ही फेमस राइटर है, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी झूठन में बताया है, वाल्मीकि जी ने, कि किस तरीके से स्कूल में उनको बाकी सारे बच्चों की तरह नहीं ट्रीट किया जाता था. उनको उनके क्लासरूम का फ्लोर साफ करना होता था जबकि उनके जो बाकी सारे क्लासमेट्स थे वो पढ़ाई किया करते थे. जब उनके पिताजी ने सबसे पहले टीचर को कन्फ्रंट किया उसके बाद जाके अनटचेबिलिटी खत्म हो गई. नंबर 2, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन. द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इज पॉवर्टी. अ लार्ज सेक्शन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लीड्स अ मिजरेबल लाइफ. दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ हैव नॉट्स. It is very difficult for them to fulfill the basic requirements of life like food, shelter and clothing. They are undernourished, which makes them susceptible to all kinds of diseases. They cannot perform their task properly. Economic discrimination has brought wide up gap between man and man. Thus, the society is divided into two groups, haves and have-nots.
तो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का मेन कॉज है गरीबी, जहाँ की दो ग्रुप्स बन चुके हैं आपकी सोसाइटी में। एक वो जिनके पास पैसा है, अमीर है, सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, जिनको हैव्स में काउंट किया जाता है, और दूसरी तरफ हैव नॉट्स, यानी कि उनके पास बेसिक नेसेसिटी वाली जो चीज़ें होती हैं वो भी provided nahi hoti. Number 3, gender discrimination. Gender discrimination, which means inequalities between men and women in different fields, has always been in existence in our society. Girls' education since very early times has been neglected in India. The literacy rate among women has always been far below than that of men. Girls have never been given better opportunities to improve their personality. They have been considered a burden on the family and therefore they lack proper bringing up. The situation is not much changed even today. No doubt we never lag behind in boasting women liberation, but in most of the Indian families, girls are still not considered the source of pleasure right from their birth. तो इंडिया में, इंडियन सोसाइटी में स्पेशली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखा जाता है। लड़के को और लड़कियों को एक बराबर नहीं माना जाता है। लड़कियों को ज़्यादातर आज की डेट में भी जैसे ही वो पैदा होती है उसको हैप्पीनेस या प्लेजर का सोर्स नहीं माना जाता, बल्कि एक श्राप माना जाता है, जिसकी मदद से जब एक ही परिवार में लड़का और लड़की ग्रो अप भी होता है तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं होती है, अलग तरीके से उनको बड़ा करा जाता है। Number 4, educational backwardness. Needless to say that education imparts knowledge and skills. It instills civic sense and the spirit of acceptance and tolerance among the people. But it is unfortunate that education has never been given due importance. During the British period, education was not mass-based but was limited mainly to urban areas. Primary education was neglected. तो ब्रिटिशर्स के टाइम से ही जो एजुकेशन की बैकवर्डनेस है वो इंडिया में देखी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ने के लिए नहीं जाते थे, बेसिक नेसेसिटी भी से नहीं मानी जाती थी। जिनका मन करता था या जो सोर्सेज अवेल कर सकते थे, अफोर्ड कर सकते थे, वो ही पढ़ा करते थे। Quick facts. For a very long period of time, people discouraged the idea of giving education to girls. This became the major cause of their backwardness in the long run. बहुत लंबे टाइम के लिए लड़कियों को पढ़ाना डिस्करेज करा जाता था, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी हमेशा से ही पिछड़ी हुई मानी जाती है। At the end of the British rule, Indian society had a small minority of well-educated people, while the large majority was illiterate. No doubt there has been some improvement, but the fact is that even today illiteracy exists in our society. There is a large group of people which is not aware of the value of education. It is shocking that today more than 8 crore children between age group of 5 to 14 suffering as laborers instead of studying. तो आज की डेट में भी जो बच्चे हैं 5 से लेकर 14 या 18 साल तक के बच्चे, वो पढ़ नहीं रहे हैं बल्कि मजदूरी कर रहे हैं। इट इज़ वेरी शॉकिंग कि आज के टाइम में भी जो लोग हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा महत्व रोजगार को देते हैं। Universal adult franchisee. Universal adult franchisee is a very important aspect of democratic societies. In a democratic country like India, every adult citizen who is not less than 18 years of age exercises the right to vote is called universal adult franchise. It is clear that no person should be prohibited from the voting right on ground of race, color, sex or religion. तो इंडिया में 18 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं वो वोट कर सकते हैं। इसी को यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द कलर, रेस, रिलीजन, कास्ट उनको वोट देने से रोका नहीं जा सकता। The right to vote stimulates the interest of people in public affairs. Through this right, the government ensures its citizens self-respect and a sense of being a part of the government. It inculcates self-importance and a sense of security. It facilitates the opportunity of equality in the society. और इसी की वजह से लोगों के मन में ये भाव भी आता है कि हम भी गवर्नमेंट का पार्ट है और हमारी भी कोई सेल्फ-रिस्पेक्ट और इम्पोर्टेंस है इस देश को चलाने में। Quick facts. Dr. B.R. Ambedkar, who believed in equality, outlined his vision of an ideal society. My ideal would be a society based on liberty, equality and fraternity. An ideal society should be mobile and full of channels which allow the change taking place in one part to affect other parts. In an ideal society, there should be many interests consciously communicated and shared. This is fraternity, which is only another name for democracy. Democracy is not merely a form of government, it is primarily a mode of living, of conjoined experience. It is essentially an attitude of respect between fellow men.
तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ही आइडिया था इक्वालिटी का, और उनका मानना ये था कि एक इक्वालिटी वाली सोसाइटी वो है जहाँ पे लोगों का और गवर्नमेंट का कांस्टेंट इंटरैक्शन हो रहा है और कोई भी डिफरेंस दोनों के बीच में नहीं दिखाया जा रहा है. Government's efforts to implement equality assured by the Constitution. Our Constitution ensures equal status and opportunity to each individual. It guarantees fundamental rights to all its citizens. These citizens are essential for an individual to develop her personality and lead a life with dignity. Thus, equality is guaranteed to all. This is recognized in democratic India. Everyone is equal before law. It means that no one can be discriminated against on the grounds of religion, race, caste, sex, or place of birth, etc. People committing the same crime are punished equally regardless of their status. The same right applies in matters of their education and employment. Everyone has the right to avail equal access to shops, restaurants, hotels, and places of public entertainment. Practice of unsociability has been made illegal. Those who follow this practice are liable to be punished. Our government has introduced several laws in this regard. It has also started several programs in order to give maximum help to those who belong to the group of disadvantaged communities. तो गवर्नमेंट भी अलग अलग लॉज लेकर आ रही है, प्रोग्राम्स लेकर आ रही है, जिससे कि अगर कोई अनटचेबिलिटी, अनसोशेबिलिटी या फिर डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस करता है या फिर ऐसी कोई चीजें करता है कि किसी दूसरे इंसान को अनइक्वल फील होता है, तो उनके लिए लॉज और प्रोग्राम्स लाए जा रहे हैं और ऐसे लोगों को पनिश भी किया जाए. Quick facts. The midday meal scheme is covered by the National Food Security Act 2013. Tamil Nadu was the first state to be implement this scheme. तो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंडर ही मिड डे मील स्टार्ट हुआ था और तमिलनाडु पहला स्टेट था जिसने मिड डे मील स्टार्ट किया था. Midday meal scheme. The midday meal scheme is one such scheme which the government has introduced to improve the lives of the poor. This program has been introduced in all government elementary schools. Under this program, children are provided with cooked food during their school hour. This program proved to be advantageous from several points of view. Previously, the poor children avoided to go to school, but now they have become very regular in attending school. They don't need to go home during the recess for lunch. Once they come in the school in the morning, they stay there till the school time is over. This has benefited their mothers too. Now they don't need to come back home from their workplace to feed their children. This program has really encouraged a large number of children to attend school. तो मिड डे स्कूल की मदद से ही जो काफ़ी सारे लोग गरीबी की वजह से नहीं जाते थे स्कूल, वो जाने लग गए हैं और रिसेस के टाइम में उनको वापस घर जाने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मिड डे मील स्कीम के तहत ही उनको स्कूल आवर्स में ही खाना मिल जाता है. Another important aspect of the midday meal scheme is that it has brought both lower and upper caste children at the same level. They eat together the same food. There are also some schools where Dalit women cook food. Thus, caste factor doesn't matter much now. The midday meal scheme is a boon to the poor students. Before this scheme, a number of poor students, due to lack of sufficient food, failed to concentrate on their studies. But now they have become prompt to their studies with enough food in their stomachs. This scheme is undoubtedly a step towards removal of illiteracy. और पहले लोग भूख की वजह से, गरीबी की वजह से स्कूल भी नहीं जाते थे या स्कूल जाते भी थे तो भूख की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते थे. लेकिन अब क्योंकि मिड डे स्कीम के तहत आपको खाना मिल जाता है तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा जाते हैं, खाते भी हैं और पढ़ाई पे भी ज़्यादा ध्यान दे पाते हैं. ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है गरीबी को हटाने का. Despite all these efforts of our government, we still see disparity everywhere in our society. Discrimination and ill treatment are still prevalent everywhere. Although the government claims that it has done a great job in increasing the enrollment and attendance of the economically backward children in school by introducing the midday meal scheme, it has to do much than this to establish real equality. इन सारे programs के बावजूद भी काफ़ी सारी ऐसी discrimination या inequality आज भी देखी जाती है. तो इससे पता चलता है कि midday meals काफ़ी नहीं है, आपकी inequality को हटाने के लिए और भी ज़्यादा efforts डालने पड़ेंगे. We find a great difference between the schools attended by the poor students and those attended by the rich ones. Unless this difference is eliminated, we can't think of a society based on equality. For this, we will have to follow the principle that teaches us not to look down upon anyone. Everyone is equal and deserves to be treated with dignity.
जो अमीर लोग हैं वो अलग टाइप के स्कूल में जाते हैं, गरीब अलग टाइप के स्कूल में जाते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा भेदभाव देखा जाता है। हमें ये प्रिंसिपल को फॉलो करना पड़ेगा कि हमें किसी को भी नीची नज़र से नहीं देखना है। जितने भी लोग हैं, चाहे वो कोई भी काम कर रहे हैं, अमीर है गरीब हैं, सारे एक ही स्ट्राटा के लोग हैं, उनको एक ही नज़र से देखना चाहिए और हर किसी का जन्म सिद्ध अधिकार है कि उसको रिस्पेक्ट और एक डिग्निफाइड लाइफ मिले। Inequality. How have other countries been affected? Inequality is not only prevalent in India, it exists even in developed states like USA, where African Americans have been denied right to equality for centuries. Blacks in USA did not enjoy parity status for centuries. It was left to Rosa Parks, an Afro-American woman, to refuse seat to a white man in a bus on 1 December 1955. The refusal started the civil rights movement in USA led by Martin Luther King. In the year 1964, US passed the Civil Rights Act, which brought an end to discrimination on the basis of race, religion, or maternal origin. Likewise, Afro-American children were no longer to be discriminated in school. However, many Afro-Americans still live in a pathetic condition. The rise in power of the first black president, Barack Obama, has raised hopes for black people, and gradually the society is exposed to change its attitudes towards the black. तो आपके जो डिस्क्रिमिनेशन है कास्ट के बेसिस पे, कलर के बेसिस, वो सिर्फ इंडिया में नहीं है बल्कि डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहाँ भी देखी जाती है। जब जो वहाँ के ब्लैक्स हैं यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो आज की डेट तक बड़े पैथेटिक कंडीशन में हैं, लेकिन जब से बराक ओबामा प्रेसिडेंट बने हैं तब से थोड़ी उम्मीद ऐसी जागी है और लोगों के मन में ये भाव डाला जा रहा है कि अपना एटीट्यूड ब्लैक लोगों की तरफ चेंज किया जाए। Challenges before democracy. Few decades ago, upper caste people dominated all spheres of society like politics, bureaucracy, education. Meher caste people were not allowed into the village and lived outside the village area. They were very poor, owned no land. Dr. Bhim Rao Ambedkar, who belonged to this caste, fought for the rights of the Dalits. The movement led by him had an impact on the Indian constitution. He urged Dalits to take various types of government jobs in order to move out of the caste system. Due to this and other leaders' great efforts, now we can see the class once considered as untouchables has now occupied many prominent places everywhere. Such a situation affects our society, so there is always a rigorous struggle for the equal recognition and respect for all persons, which is a great challenge. तो पहले के टाइम से लेकर अब तक डेमोक्रेसी ने सबसे ज़्यादा फेस किया है डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द लोअर कास्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी ऐसे ही एक दलित कास्ट से बिलोंग करते थे। उन्होंने बहुत लड़ाई करी, स्ट्रगल किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने ऐसे चेंजेस लेकर आए जिसकी मदद से आज की डेट में आप काफ़ी सारे दलित जो वंस अपॉन अ टाइम अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करे जाते थे वो प्रोमिनेंट पोजिशंस पे आज की डेट में आपको देखने को मिलेंगे। Recap. Equality is the central theme or soul of democracy. Equality is the foundation of democracy on which other pillars rest. Universal adult franchise has been introduced in India. Midday meal scheme have helped to educate the children. Dalits have now occupied many prominent places in society. Students इस chapter में आपने equality के बारे में पढ़ा। किसी भी democracy के लिए equality important है। इंडिया में universal adult franchise को introduce करा जा चुका है और दलित्स आज की डेट में आपको काफ़ी ज़्यादा prominent places पे भी दिखाई देंगे। Students, with this we come to the end of this chapter. इसकी जितनी भी exercises हैं वो आपको खुद से करनी है।